हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेक वे इजी में। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे BIS टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग MCQ का प्रैक्टिस सेट। और ये MCQ आपके जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि SSC, BARC NRB, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे 30 क्वेश्चंस की। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलो तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज के पहले 10 क्वेश्चन हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंडर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, इन जनरल एनी सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस यूजफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एज ऑप्शन ए सर्विस सिस्टम, ऑप्शन बी प्रोडक्शन सिस्टम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, and the correct answer is option B production system. In general, any system that produces useful products or services is called as production system. Question number 2, which of the following is an example of constant mass manufacturing processes? Option A rolling, option B turning, option C broaching, option D swaying, and the correct answer is option number A rolling. क्वेश्चन नंबर 3, गैस वेल्डिंग इज़ अ टाइप ऑफ। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए कांस्टेंट मास प्रोसेस, ऑप्शन बी मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, ऑप्शन सी मटेरियल एडिशन प्रोसेस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मटेरियल एडिशन प्रोसेस। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज option A less accurate than closed loop control system, option B more accurate than closed loop control system, option C equally accurate to closed loop control system, option D cannot say, and the correct answer is option A less accurate than closed loop control system. Question number 5, what is a disadvantage of automatic control system? Correct. Option A, it reduces effects of non-linearities. Option B, it reduces effects of distortions. Option C, it has tendency to overcorrect errors. Option D, none of the above, and the correct answer is option C, it has a tendency to overcorrect errors. Question number 6, the objective of utilization of available plant facilities comes under option A scheduling techniques of production control, option B production planning techniques of production control, option C routing techniques of production control, option D follow-up techniques of production control, and the correct answer is option B production planning techniques of production control. Question number 7, the patterns which are made into two or more pieces are called as। ये बहुत ही easy question है। ऑप्शन ए सॉलिड पैटर्न्स, ऑप्शन बी स्प्लिट पैटर्न्स, ऑप्शन सी लूज पीस पैटर्न्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्प्लिट पैटर्न्स। द पैटर्न्स विच आर मेड इनटू टू or more pieces is called as split patterns. Question number 8, the sand in its natural or moist state is called as option A green sand, option B loam sand, option D dry sand, option D none of the above, and the correct answer is option A green sand. Question number 9, blowholes in casting are caused by option A excessive moisture, option B low permeability, option C excessive fine grains, option D all of the above. Correct answer is option D all of the above. Question number 10, permeability can be defined as the property of molding sand. Option A to hold sand grains together, option B to allow gases to escape easily from the mold, option C to withstand the heat of melt without showing any sign of softening, option D none of the above, and the correct answer is option B to allow gases to escape easily from the mold. क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से शुरू करते हैं हम हीट ट्रांसफर के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर इफेक्टिव वर्किंग ऑफ फिन्स द थिकनेस ऑफ द फिन्स शुड बी ऑप्शन ए लार्ज, ऑप्शन बी स्मॉल, ऑप्शन सी थिकनेस ऑफ फिन्स
does not affect on a fin effectiveness. Option D, unpredictable. Correct answer is option B, small. Question number 12. Aluminium is used as a fin material because option A, it has higher convection heat transfer coefficient. Option B, it has higher thermal conductivity. Option C, it has lower convection heat transfer coefficient. Option D, it has lower thermal conductivity. And the correct answer is option D, it has lower thermal conductivity. Aluminium has a lower thermal conductivity, so it is used in fin material. Question number 13. Generally, the external thermal resistance between the surface of the body and the environment is option A, less than the internal conduction resistance in the body. Option B, more than internal conduction resistance in the body. Option C, same as the internal conduction resistance in the body. Option D, none of the above. And the correct answer is option B, more than the internal conduction resistance in the body. Question number 14. The Grashof number is natural convection plays same role as option A, Prandtl number in forced convection, Reynolds number in forced convection, Nusselt number in forced convection, none of the above. Option B is the correct answer, Reynolds number in forced convection. Question number 15. In parallel flow, heat exchangers, the exit option A, the exit temperature of hot fluid is always equal to the exit temperature of cold fluid. Option B, the exit temperature of hot fluid is always less than the exit temperature of cold fluid. Option C, the exit temperature of hot fluid is always more than the exit temperature of cold fluid. Option D, we cannot predict comparison between exit temperature of hot fluid and cold fluid. And the correct answer is option C, the exit temperature hot fluids is always more than the exit temperature of cold fluid. क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ से शुरू करते हैं हम मेट्रोलॉजी और क्वालिटी कंट्रोल के क्वेश्चंस. चलो तो शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ स्टैंडर्ड्स पैरेलैक्स एरर इज ऑब्जर्व्ड. ऑप्शन ए, लाइन स्टैंडर्ड. ऑप्शन बी, एंड स्टैंडर्ड. ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. And the correct answer is option A, line standard. Question number 17. Testing flatness of or straightness of a surface is possible using option A, vernier caliper. Option B, micrometer. Option D, attocolinometer. Option D, all of the above. Correct answer is option C, attocolimeter. Question number 18. How is interference between shaft and hole calculated? Option A, interference is equal to maximum shaft minus minimum hole. Option B, interference is equal to minimum shaft minus maximum hole. Option C, interference is equal to minimum shaft plus maximum hole. Option D, none of the above. And the correct answer is option A, interference is equal to maximum shaft minus minimum hole. Question number 19. Indicator method is used to test option A, straightness. Option B, squareness. Option C, flatness. Option D, all of the above. And the correct answer is option B, squareness. Indicator method is used to test the squareness of the object. Question number 20. Which among the following is a type of clearance fit? Option A, force fit. Option B, push fit. Option C, slide fit. Option D, tight fit. Option C is the correct answer, slide fit. यहाँ से शुरू करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 21. The unit of physical quantity which does not depend on the unit of any other physical quantity is called as option A, independent dimensions. Option B, fundamental dimensions. Option C, core dimensions. Option D, none of the above. And option B is the correct answer, fundamental dimensions. The unit of physical quantity which does not depend on the unit of any other physical quantity is known as a fundamental dimensions. Question number 22. Which of the following is not a primary quantity? Option A, mass. Option B, temperature. Option C, time.
ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ये सभी प्राइमरी क्वांटिटीज है, सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स? ऑप्शन ए एम एल टी रेस टू -2, ऑप्शन बी एम एल टी रेस टू -1, ऑप्शन सी एम एल रेस टू 2 टी रेस टू -2, ऑप्शन डी एम एल रेस टू 2 टी रेस टू 2, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एम एल टी रेस टू -2। Question number 24, the velocity gradients over the boundary layer are option A small, option B large, option C sometimes small and sometimes large, option D cannot say, and the correct answer is option B large. The velocity gradients over the boundary layer are large. Question number 25, if viscosity of fluid is more, the thickness of boundary layer is option A more, option B less, option C not affected by change in viscosity, option D unpredictable, and the correct answer is option number A more. Question number 26, if stream function psi satisfy the Laplace equation, it is a possible case of option A a circular flow, option B a rotational flow, option C an irrotational flow, and option D none of the above, and the correct answer is option C an irrotational flow. Question number 27, which acceleration has non-zero value in uniform flow? Option A local acceleration, option B convective acceleration, option B both, option D unpredictable, and correct answer is option A local acceleration. Local acceleration has a non-zero value in uniform flow. Question number 28, viscous force are not present in option A rotational flow, option B irrotational flow, option C laminar flow, option D none of the above, and the correct answer is option B irrotational flow. In irrotational flow there is a no present of viscous forces. Question number 29, the component of acceleration due to change in the direction of velocity vector is called as option A direction acceleration, option B tangential acceleration, option C normal acceleration, option D cannot say, and the correct answer is option C normal acceleration. The component of acceleration due to change in the direction of velocity vector is known as normal acceleration. चलो तो दोस्तों आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस डज नॉट यूज बर्नौलीज इक्वेशन एज इट्स वर्किंग प्रिंसिपल? ऑप्शन ए वेंचुरीमीटर, ऑप्शन बी ओरिफिस मीटर, ऑप्शन सी पिटा ट्यूब, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। चलो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ने बिल्कुल याद करके जाना एग्ज़ाम में। चलो तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।